The tricolor that will unfurl before us, it's the blood of our martyrs and the dreams of our freedom fighters woven together into saffron, white and green. Jana Gana Mangala Dayaka Jai Bharat Bhagya Vidhata Jai Hai Jai Hai Jai Hai. It's now my honor to invite our principal, sir. First and foremost, happy Independence Day. This is a proud moment for all of us as we breathe in free India. When we talk about freedom, it is freedom of thought, exploration, prosperity, and growth for the country. I am sure that we'll make our country proud by virtue of our good deeds. Up next, we have a captivating performance that bridges the gap between music and dramatic storytelling. Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. These immortal words were spoken by Pandit Jawaharlal Nehru. Our students bring history alive before your eyes. Please put your hands together for our role play. The fire of Chandrasekhar Azad, who vowed never to be captured alive. अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को मैं नहीं मानता। मेरे रगों में बहने वाला खून गुलाम होने के लिए नहीं, देश पर कुर्बान होने के लिए। Sarojini Naidu, whose pen was mightier than a sword. भारत की नारियों ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। हम अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस जालिम हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। The quiet burning resolve of Udham Singh. मुझे फांसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने देश और शहीदों का अपमान मिटाया है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। The fierce leadership of Begum Hazrat Mahal. जब तक बेगम हजरत महल के जिस्म में सांस है, अवध पर किसी फिरंगी का कब्जा नहीं होने दूंगी. And the cold face of colonial power itself, General Dyer. तुम जैसे लोगों के लिए चबूक और गोली ही सही इलाज है. ये आजादी हमने खून से प्राप्त की है। इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! I now call upon Imran Farid to deliver Maulana Azad's speech. जिंदगी का माना यही है कि हम बोझ उठाएं और बोझ इस तरह न उठाएं कि घबराए हुए उठाएं। Please welcome our students as they present a dance in celebration of the spirit of independence.